Now let us discuss the concept of a potentiometer. First of all, try to understand why a potentiometer is needed. Why do we need a potentiometer? Why do we need a potentiometer? This is the basic question which will be asked when you are dealing with this topic. Remember that if you have to measure the EMF of a cell, आप किसी सेल की EMF मेजर करना चाहते हैं. To measure the EMF of a cell, then you will find that voltmeter is not a device. What is EMF? EMF is the potential drop kind of thing. If you remember, cell में हमने कहा था, we said that in a cell this is the EMF, this is the internal resistance. Let us suppose to this cell you want to measure the EMF. So let us suppose you have connected a voltmeter, because we know, हमें पता है कि voltmeter terminal voltage बताता है, potential drop बताता है. So in case you connected a voltmeter to this cell, then you see some current will be passing, because unless until some current is passing, the voltmeter cannot give the reading. तो एक current pass करेगा, and when the current will pass, then you will not be able to measure the EMF, rather you will be measuring the terminal voltage across this cell. So I am trying to highlight this fact that in case you want to measure the EMF of a cell, voltmeter is not a suitable instrument. अगर आप एक सेल की EMF मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर आपको टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके दिखाएगा, जो कि इस केस में EMF से लेस हो जाएगी. EMF तभी मेजर हो सकता है जब सेल के थ्रू कोई भी करंट पास ना करे. यू अंडरस्टैंड? करंट जब जीरो होगा, देन ओनली द टर्मिनल वोल्टेज विल बी EMF, और ये वर्क आप वोल्टमीटर के हेल्प से नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई यू रिक्वायर अ पोटेंशियोमीटर. Potentiometer is a device which will measure the terminal voltage across the cell without passing any current into that, and that is why it is a device suitable for measuring the EMF of a cell. You understand this first thing? Secondly, an additional advantage is that to measure the internal resistance of a cell, to measure the internal resistance of the cell, to measure the internal resistance of a cell, this device is very well suited. So these are, you can say, the two main functions we will be performing with the help of a potentiometer. If you feel like, you can write here to measure the EMF of a cell, because voltmeter can't do that, because voltmeter cannot do that. You understand? These are the two main functions. In this function, when it's a question of measuring the EMF, you can further compare the EMF of two cells. So let us one by one try to see how these things can be achieved. But before that, we will have to draw the basic diagram
of how a potentiometer looks like, what are the basic components of that. So let us talk about the uses of a potentiometer. Let us talk about how to measure EMF of a cell. How to measure EMF of a cell by a potentiometer. By a potentiometer. Before we discuss this particular topic, try to recapitulate certain points of our last lecture. We had said that in case there are two cells connected in series along with a resistance this way. Consider that you have two cells of same EMF E and E connected to a resistance. Then you will agree that whatever may be the value of this resistance, in case these two EMFs are same, अगर ये दोनों EMF same है तो सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा. There will not be any current into the circuit because these two cells are equivalent and they are opposing each other. इनके करंट की फ्लो की टेंडेंसी ऐसे है तो इसकी करंट की फ्लो की टेंडेंसी क्लॉकवाइज है, दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगी. Here in this circuit you agree that current will be zero. I is equal to 0 in this circuit. You agree? Now once you have understood this concept, then try to understand what a potentiometer looks like. In a potentiometer, essentially we have a meter long wire. There is no restriction as such that the wire should be of 1 meter only, but generally we keep a meter long wire which is connected to a supply voltage. This supply voltage may be, let us suppose this supply voltage is 100 volt. This supply voltage is connected to this potentiometer wire. The thickness of this potentiometer wire is something like you find in some musical instruments, say guitar वगैरह की जो वायर जितनी थिक होती हैं, थिन वाली, ऑलमोस्ट उतनी थिकनेस की ये वायर है जिसको हमने यहां पे शो किया है. Now you see, before I draw rest of the components, try to see what is the function of this entire wire. Here, this wire is acting like a potential divider. आपको ऐसा समझना चाहिए कि ये पूरी वायर एक 100 वोल्ट के सोर्स की तरह वर्क कर रही है, जिसमें ये पॉइंट 100 वोल्ट पे है. दिस पॉइंट इज एट 100 वोल्ट. इन केस यू see the midpoint of this wire, so this is at 50 volt. If you see this point of the wire, this is at 0 volt. अगर आप 25% of the length पे होंगे तो this will be around 75 volt. You understand this? और अगर आप इस point of wire पे होंगे तो this is like 25 volt. This is the kind of potential divider it is working. और भी चीजों को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि इट इज एक्टिंग लाइक अ वोल्टेज सोर्स. नाउ डोंट लुक एट दैट. नाउ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वायर. देन यू कैन से इफ यू जॉइन दीज टू पॉइंट्स ऑफ द वायर, then the potential difference between these 2 points will be 25 volt. You understand? 100 minus 75
25 वोल्ट, इस वोल्टेज सोर्स की सपोर्ट की वजह से इतना पोर्शन ऑफ द वायर एक 25 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा. ऑन द सिमिलर लाइन यू कैन से दिस मच पोर्शन ऑफ द वायर विल बी एक्टिंग लाइक अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 25 वोल्ट. अगेन अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको 50 वोल्ट का ड्रॉप मिल सकता है. अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट अ डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. ये पूरी वायर यहां पे एक 50 वोल्ट के बैटरी की तरह वर्क कर सकती है. यू अंडरस्टैंड? दिस वायर इज नॉट वर्किंग लाइक वायर नाउ, दिस इज वर्किंग लाइक अ वोल्टेज सोर्स जिसकी पोलैरिटी इस तरीके से है, हुज पोलैरिटी इज द वे वी हैव शोन ऑन द डायग्राम. ये हायर पोटेंशियल पे है, वो लोअर पोटेंशियल पे. यू अंडरस्टैंड? नाउ this is very much clear that in case the length of the wire is L, you can understand in case the length of the wire is L, then if you are interested in finding out what is the potential drop across this portion of the wire of length small l, अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि दिस सप्लाई वोल्टेज इज अक्रॉस द इंटायर लेंथ L, तो फिर इस स्मॉल लेंथ L के अक्रॉस कितना सप्लाई वोल्टेज है. देन यू गो बाय द यूनिटरी मेथड एंड यू कैन से द सप्लाई वोल्टेज हियर इज नथिंग बट, इफ यू गो बाय द यूनिटरी मेथड, दैट अगर पूरी लेंथ कैपिटल L है तो सप्लाई वोल्टेज Vs है, अगर ये लेंथ 1 होगी तो ये Vs बाय L होगा, एंड इन केस द लेंथ इज स्मॉल l तो यहां से यहां तक का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, यहां से यहां तक का टर्मिनल वोल्टेज Vs इंटू स्मॉल l बाई कैपिटल L होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ में आती है सबको कि अगर पूरी लेंथ L के क्रॉस Vs है तो स्मॉल l के अक्रॉस Vs बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l होगा. व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप across wire, potential drop across wire of length small l. और यहां पे कैपिटल L क्या है? यहां पे कैपिटल L इज, हियर कैपिटल L इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, टोटल लेंथ of potentiometer wire. You understand? Now I am writing this V, terminal voltage V, as Vs L by L here. I am writing this as Vs into small l by capital L here. Then naturally this will also be equal to this. You understand? For current to be zero, in case you see that the current in the circuit is zero, then you must agree that this is equal to this. Now let us go ahead with the measurement part of the potentiometer. The idea happens to be is that the EMF of a cell to be measured, the EMF of a cell to be measured is connected here like this. जिस सेल का आपको EMF मेजर करना है उस सेल को आप यहां कनेक्ट कर दें. Internally I have shown the circuit. जिस सेल का EMF आपको मेजर करना है उसको आप यहां कनेक्ट कर दें एंड यू आर गिवन अ जॉकी. जॉकी इज नथिंग बट अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन, एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन जो कि वायर के ऊपर स्लाइड कर सकती है. कहीं भी आप उसको स्लाइड करके रख के प्रेस कर सकते हैं. प्रेस करने से जिस पॉइंट पे भी चाहें इस वायर में आपका कनेक्शन बन सकता है. You understand? You are given a flexible connection that is being shown by an arrow.
इसको आप जहां भी कनेक्ट करेंगे आपके इतने पोर्शन ऑफ वायर का कनेक्शन मेन सर्किट से हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? नाउ योर वर्क हैपेंस टू बी to find a null point. Null point means you have to connect the jockey to a point where you will find that an ammeter connected to this shows no reading. आपको इस एक्सपेरिमेंट में वैसी पॉइंट फाइंड करनी है जहां पे इस एमीटर में जीरो रीडिंग शो होगी. You understand? Now you see, this situation and this situation is similar. जो सेल को आपको EMF मेजर करना है वो सेल को आपने यहां दिखाया है and you are saying that the current in the circuit ammeter is zero. You are saying that ammeter की रीडिंग जीरो है. So this is the situation here. एंड आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि इन केस यू आर टचिंग दिस वायर अप टू अ लेंथ स्मॉल एल, दैट मीन्स द सप्लाई वोल्टेज विच इज कमिंग फ्रॉम दैट वायर इज Vs इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल. जब आपने इसको स्मॉल एल लेंथ के पास कनेक्ट किया है तो इस वायर से जो सप्लाई आ रही है दैट इज इक्वल टू दिस, इजंट इट? एंड आपकी कंडीशन ये है कि अगर करंट जीरो है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी. दैट मीन्स दिस ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल measured, EMF of the cell measured, E will be equal to, this E will be equal to VSL by capital L, will be equal to Vs into small l by capital L. Let us suppose L is 1 meter and जिस पॉइंट पे आपने नल पॉइंट ऑब्टेन किया है स्मॉल l वो 50 सेंटीमीटर है. पूरी लेंथ 1 मीटर की है, आपको 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है. दैट मीन्स जो भी सप्लाई वोल्टेज है, वट एवर इज द सप्लाई वोल्टेज दैट विल बी नोन टू यू, उसका हाफ होगा उस सेल का ईएमएफ. नाउ हाउ कैन यू से दैट यू हैव मेजर्ड ईएमएफ? आप कह सकते हैं कि ईएमएफ आपने कैसे मेजर किया? हो सकता है आपने टर्मिनल वोल्टेज मेजर किया हो. नो, हियर यू कैन सी देयर इज नो करंट पासिंग इनटू दिस सर्किट. इस सेल के थ्रू कोई करंट पास नहीं कर रहा है. देयरफॉर व्हाटएवर इज द टर्मिनल वोल्टेज वही इसकी ईएमएफ भी होगी. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द वे you happen to measure the EMF of a cell. Now same situation can be used to compare the EMF of two cells. You can compare the EMF of two cells comparison of EMF of two cells. Comparison of EMF of two cells can be done by this fact that EMF being measured happens to be proportional to small l. This small l is called balancing length. This small l is called balancing length. आपको एक लेट अस सपोज वर्क दिया गया है जिसमें टू सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है, विच वन इज मोर विच वन इज लेस. देन व्हाट यू विल डू, यू कनेक्ट अ सेल और उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालिए. यू कनेक्ट अ सेल एंड फाइंड इट्स बैलेंसिंग लेंथ. लेट अस सपोज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल इज E1 and its balancing length is L1. Then you know that EMF will be proportional to this balancing length L1. Now disconnect that cell और new cell को connect करिए. Let us suppose its EMF is E2 and its balancing length comes out to be L2. तो E2 will become proportional to L2, isn't it?
E2 will become proportional to L2. Then if you take the ratio of these two, जब आप इन दोनों की रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे, then this proportionality sign will be converted into equality sign, and this will result into a formula like this. You understand? The line, the manner in which you measured the EMF of a cell, same method can be used if you want to compare the EMF of two cells, and this will be the famous formula for that. You understand? Now let us look at the another use of the potentiometer. As we said, that was to measure the internal resistance of a cell. Let us now discuss how to measure the internal resistance of a cell. How to measure the internal resistance of a cell. Before we discuss this topic, let us recap some of the concepts we have already discussed. Imagine that you have a cell whose EMF is E and internal resistance is small r. And let us suppose this is connected to an external resistance capital R. You understand here? Imagine the situation that you have a cell with EMF E, internal resistance is small r, which is connected to an external resistance capital R. Assume that the current I is flowing here, and same current I will be going here. You understand? Now, if you remember, we had written that the terminal voltage across this cell will be V. The terminal voltage across this cell will be capital V. Then you can clearly see, इस लूप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगी कैपिटल आर के क्रॉस, वट एवर पोटेंशियल ड्रॉप विल बी अक्रॉस कैपिटल आर, वही टोटल पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगी अक्रॉस दिस सेल. एंड रिमेंबर दैट दिस सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड. सेल अगर डिस्चार्ज हो रही है, क्यों डिस्चार्ज हो रही है? बिकॉज इससे करंट बाहर आ रहा है. एंड यू कैन राइट दैट द terminal voltage across this cell V is E minus IR, as we had written for the case of discharging, and this same capital V, as you said, is across this capital R. So this capital V is capital I into capital R. ये दोनों चीजें सेम हैं. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में से, इन केस इन बोथ दीज इक्वेशंस, करंट आई को इलिमिनेट कर दें, इलिमिनेट आई टू गेट, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में से करंट आई को इलिमिनेट कर दें, देन you can write that internal resistance is nothing but EMF upon this terminal voltage minus 1 into capital R. In case you eliminate capital I from these two equations,
then you will get the expression for internal resistance in terms of EMF, terminal voltage and external resistance. And essentially we will be using this formula to calculate the internal resistance with the help of a potentiometer instrument. Now let us see how do we do that. Again, imagine that you have a potentiometer wire here, you understand, connected to some supply voltage. Connected to some supply voltage. First time what you do, that you connect the cell whose internal resistance you want to measure. Right now you can see, say the balancing length comes out to be L1. The balancing length comes out to be L1. What will you conclude from this? अगर आपने सेल को ऐसे कनेक्ट किया और उसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई, what is the meaning of this? Meaning is that right now this EMF is proportional to this balancing length L1. Why EMF? Because right now there is no current passing through this cell. You understand? अभी आपने इस सेल में कोई भी करंट नहीं पास कर रखा है. जब आपने जॉकी को कनेक्ट किया होगा तो इस एमीटर की रीडिंग 0 आ रही है. दैट मीन्स इस सेल के थ्रू कोई भी करंट नहीं पास कर रहा है. सो आपने अभी इसकी ईएमएफ को बैलेंस की है थ्रू दैट लेंथ L1. नाउ व्हाट यू डू, आप यहां पे एक ऑक्सिलियरी सर्किट बनाएं. यू कनेक्ट एन ऑक्सिलियरी सर्किट हियर एज यू हैड डन हियर. आप देख सकते हैं वही सिचुएशन है. वो पूरी सेल में बाहर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा दिया, जिसकी वजह से नाउ इन दिस सेल अ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. और अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेंगे, देन दैट विल नॉट बी ईएमएफ, रादर इट विल बी टर्मिनल वोल्टेज. व्हाई टर्मिनल वोल्टेज? बिकॉज द करंट हैज स्टार्टेड पासिंग इनटू दिस सेल. यू अंडरस्टैंड? आपको बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए फिर से जॉकी को मूव करना होगा. जॉकी अब यहां पे इस एमीटर में 0 रीडिंग नहीं देगा. दिस जॉकी विल नॉट बी शोइंग 0 रीडिंग हियर, बिकॉज जब इस सेल में करंट इधर से पास कर रहा है, इफ इट इज पासिंग फ्रॉम दिस साइड, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सेल हैज चेंज्ड. एंड आप देखेंगे कि आपके जॉकी को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा. यू हैव टू शिफ्ट द जॉकी मे बी एट दिस पॉइंट, एंड लेट अस सपोज द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज L2. आप देखेंगे कि आपकी बैलेंसिंग लेंथ अब L1 नहीं L2 पे है. एंड दिस L2 इज एसेंशियली रिप्रेजेंटिंग द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल. यू अंडरस्टैंड? So I am writing here that E by V, that V is proportional to L2. If you divide these two, then what will you obtain? You will obtain E by V. This is equal to L1 upon L2. E by V is equal to L1 upon L2, isn't it? And now if you substitute this expression into the formula you were expected to use, then you can find out that internal resistance is equal to L1 upon L2, that E by V, L1 upon L2 minus 1 into capital R. This is the required formula you will be using if you want to calculate the internal resistance of a cell. Remember that here L1 is greater than L2. This is the way to recognize the data if it is given to you in the question. Question में L1 L2 की जो values होंगी वो हो सकता है L1 L2 लिख के ना दें. How will you recognize them? जो ज्यादा value होगी
that will be kept in numerator, जो lesser value होगी that will be kept in denominator. जो ज़्यादा value है that is L1, जो smaller value है that is L2. You understand? So this is the way a potentiometer can be used to calculate the internal resistance of a cell. Now let us look at other applications of potentiometer. Now let us discuss another example of potentiometer, that is in the form of a device called meter bridge. This meter bridge is generally used to measure a known resistance through the principle of Wheatstone bridge we discussed earlier. This device is used to measure a known resistance through Wheatstone bridge. Before I discuss this meter bridge, let us recapitulate what was Wheatstone bridge. We had said that it's a combination of 5 resistors. Let us suppose I am denoting those resistors like this. Say this resistance value is R, this resistance value is X. Say you are having a supply voltage here. Vs. Let us suppose the resistance of this is L and the resistance of this is L minus L. And we had said that there is another resistance through this and there is a connection here. We had said that the balancing condition, we had said that if A is equal to 0, balancing condition says that if current through this mid portion, this resistance is 0, then R by X was equal to this resistance upon this resistance, was equal to L upon capital L minus small l. These are essentially acting as resistance. Now this kind of arrangement we happen to obtain in a potentiometer. In a potentiometer you had seen that there is a supply voltage. In a potentiometer there is a supply voltage which is connected to a resistance. That resistance was in the form of a thick wire. Here some other slots are also made. Potentiometer में कुछ arrangement होती है that you can connect a resistance here. Then एक slot होती है in which you are connecting the unknown resistance. Let us suppose यहाँ पे हमने एक unknown resistance X connect कर दिया है और यहाँ पे एक known resistance है R. Then earlier we were connecting jockey from this place, but now the jockey is connected from this side. यहाँ से आप इसकी कनेक्शन निकाल के एमीटर के थ्रू बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन करने का ट्राई करते हैं. यू हैपन टू ट्राई दी बैलेंसिंग पॉइंट आफ्टर कनेक्टिंग द जॉकी फ्रॉम द पॉइंट ज्वाइनिंग R and X.
Let us suppose the balancing point is L. आपको balancing point small l पे मिलती है, then you can clearly see the rest of the length is capital L minus small l. जो बाकी लेंथ बचेगी वो कैपिटल L माइनस स्मॉल l होगी. नाउ इफ यू कंपेयर दिस डायग्राम विद दिस डायग्राम यू विल फाइंड कंप्लीट सिमिलैरिटी. आप देखिए, दिस R इज हियर, दिस X इज हियर, वट एवर ज्वाइनिंग वायर विद एमीटर विद जॉकी इज देयर, दैट इज बीइंग शोन हियर. Zero reading in ammeter, that is the balancing condition. Here it should be zero reading, it has been written there. This length L is proportional to the resistance of this part. Why? Because resistance के बारे में आपने पढ़ा, it is directly proportional to length. So this much length is representing this resistance and this much length is representing this resistance. Therefore, here also this formula will be used. अगर आपकी रेजिस्टेंस अननोन X है, अननोन रेजिस्टेंस X will be equal to, you can see from this place, equal to R into L minus small l by small l, isn't it? अगर आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और ये बैलेंसिंग पॉइंट्स मिल गए, देन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगी. यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस R, बैलेंसिंग लेंथ निकल आई, उसको पूरी लेंथ में से लेस करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. सो दैट इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, popularly known as meter bridge. Why meter bridge? Because generally we keep this length to be 1 meter, and the purpose of this device is to calculate the unknown resistance. Now, before I go ahead, let me summarize what we all discussed in this class. In this lecture, first we said that galvanometer is the main device which is converted into ammeter or voltmeter. Galvanometer is a device which is converted into ammeter or voltmeter. Then we discussed various aspects of ammeter, how to conversion of galvanometer into ammeter. We discussed on range, how to increase range. Then similar thing we talked about voltmeter, that how you can convert a galvanometer into a voltmeter, how can you increase the range of a voltmeter. Then we found that EMF of a cell cannot be measured with the help of a voltmeter, so we discussed another device called potentiometer, with the help of which you could measure the EMF, you could measure the internal resistance, or you could compare the EMF of a two cells. And at the end we discussed meter bridge application, which could calculate the value of unknown resistance. Now, in the next lecture, we will be talking about the thermal effects of electric current. This is all in today's lecture. Thank you.